कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है, छोटा सा गाँव है। क्या नाम है? रानो गढ़ी। ये किधर है? ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन 5 तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेम्बरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है? ये रानो गढ़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ? तो एक छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है सर रिकॉर्ड पे? नो सर। आप बताएं व्हाट वी नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेम्बरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो? My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93 Yes, my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 page, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced the schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this honorable commission could be complied with. सर अब्दुल्ला साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया, तो आपने क्लेम पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपीके, तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये? आप वो तहरीरी बताइए ना, जो वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू। कोई है कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेम्बरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई इलेक्शन कमीशन तो आपके मेम्बरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेम्बरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर, Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November on same day copy enclosed to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My lord, we therefore write to them next page that they should on immediate basis provide us, and then if your lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November.
page 96 and 97. I'll read two letters. 97, if your lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो वेन्यू की बात है जी सर, venue right at the top. Number 1 we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir, we got no reply to this letter. तो देखिए एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेम्बरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो। आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना, हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये इतनी सी बात है बस। अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है वोट डालने जाना चाहे जी, तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे। नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना न्याजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीकेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, सर आप वीडियो की बात नहीं, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें, तरीकेकार से हम जानना वीडियो पे चाहते हैं। केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियो बाहर जाके जितने मर्जी चला लें, उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतना आप तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें। पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। या वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है। तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी या आपका अपना वो है, मगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे। चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा आगे। जी जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हो, हमसे पूछिए मौजूद है, हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से मांग। ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, ये मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा अंदाजन मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ होंगे, पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे देना, बहस आपकी सुनेंगे। यस चले आगे बढ़िए मखदूम साहब। सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना, एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए सर। मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लड़से पे आपकी जजमेंट मैं नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं, यू आर ए रिस्पोंडेंट।
ठीक है, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आपके वकील कौन हैं? आपके वकील कौन हैं? आमिर खान साहब है, तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया। My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका आइन में, जो इनके आइन में इंदराज है। तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. ये इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे, जी 5 सर, पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलेवेंट क्लॉजेस बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं, अगर आप सर आगे देखें देन ऑन पेज इसमें 142 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? no sir, it's not there. How the nomination form will be given to the ये मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर, sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your lordship sees ये the central organization is mentioned. साहब से ये आप पूछ रहे हैं कि बता दें तरीकेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर? अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है, पेज 90 पे ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है जी सर। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023, Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ हुआ इनके सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं, प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग-अलग 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। दे आर 10 इन नंबर। ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट। Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें, withdrawal panels कहाँ है? हमारे पास नहीं है ये, we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी, So, my lord, these are there. Then if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Sikandar, you have taken my book, yeah, that's not so bad. My lord, Federal Election Commission
if an election commission shall be formed comprising following federal election commissioner. बात कर चुके हैं आप। सर अगर आप रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर ठीक है, अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें, and then the functions, and then लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन? सीपीआई के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं? 2017, ये डेट 19th June 2017, 19 जून 8 जून 2, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए। what happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428. ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435. Paragraph? Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या क्या है? Sir, इनको दोबारा टाइम दिया था। different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो आगे eventually पढ़िए यही ना। करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the ये election क्या है? act. 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज। A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold आगे elections. पढ़िए। In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड। In writ petition number 5791 of 2023. 5791 1 of 2023.
ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given your lordship the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए 81171 of 2023. जी This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, this is that page number. 644. 644. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एजेंट हुआ ये जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर. Through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? ये पेज 2 of this order 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन कंटेंटेड नहीं पड़ा है ये 657 सर. अच्छा ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है. जी सर 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है इसमें भी WP 332 का जिक्र है. जी मगर उससे ऊपर जो लिखा है when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट हेलो आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके ये सही थे. आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे. उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर उसके नतीजे पे दे हेल्ड अनदर इलेक्शन. नतायज किधर है? कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं, ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना. मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ. वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, we can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पे रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? जो हुए हाँ काम करेंगे. नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो उनकी जगह पता नहीं. ये दे दें मैं बताता हूँ इस वॉल्यूम में पढ़े. ये सारे फैक्टर आपके ये रेंज उस ऑर्डर में गुजारिश करने उसी ऑर्डर में सर सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन जो भी क्वेरीज जनाब नहीं बेशक देखिए हम आपको बिल्कुल आपकी बात जायज है
हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके पास फौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में। तो अगर किसी चीज का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। I'll need instructions on नहीं तो आप नोट करते जाइए ना ये चीज। नोट कर अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 ये इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है। 2022 10 को हुए, 6-8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन। इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 एट दैट टाइम गौहर अली खान साहब 4-1 चेयरमैन गौहर साहब थे। ये जो आपका 412 ये पेज 412 देख लीजिएगा। 412 हाँ ये आ गया ना, ये तो कुछ और है। नहीं 412 सर, ये सब पढ़ दें अगर आप। पार्ट 2 में। हाँ पढ़िए प्लीज। जी, रेफरेंस बीसीबी लेटर डेटेड सो जनाब 412 पे हैं आप। नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे। वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, आपकी जो हाईकोर्ट में प्रेयर है ना, इलेक्शन कमीशन का जो आप प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है। नहीं, ये ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें। वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाईकोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया ना, तो आपने फ्रेश करा लिए। फिर उसके बाद करवाया दूसरे। ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time, and we did it, which they are challenging now. सेकंड मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी, इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं। फिर लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना है ये वो जो पिटिशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो आपने विड्रॉ कर ली हैं, जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में WPR1171। लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous. नहीं, मगर कोई इतला तो देना हाई कोर्ट को जाकर के। सर दी है, इसमें मेंशन की होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर्सुएंट टू इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 13 सितंबर 2023 पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन हेल्ड as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको आगे ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू फुल बेंच जी जी ऑफ दिस कोर्ट। तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं ये पूरा आगे लिखे ना, सबमिट्स Submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपने किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इम्प्यून ऑर्डर। the matter was heard on 13th September। एक सेकंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे Page थे? 428। This is the order passed on 23rd November 2023। 23 नवंबर। ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, प्रेयर क्लॉज में जो इनकी है ना हाई कोर्ट में। डेट ऑफ हियरिंग was 13/9। डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है।
23/11/2023 है। जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। नहीं तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ। यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें। उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless. Mr. Gauhar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition had actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imrankhan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटिशन आपने जो फाइल की थी, जब वो क्यों आपने पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने वो क्लब तो करवाया 332 कि को लीगल इश्यूज पे यस 332 है वो। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना, बात मैं समझ योर नहीं आ ऑनर रही एक है बात की इजाजत, हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन पहले ऐसे कमीशन ना ने बताया ना, दी थी, पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो किसने नोटिस remove आया किया था उनको? इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। योर ऑनर डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना। यस योर ऑनर, में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे। इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया। तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते हैं। अदरवाइज वो इनफ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इंप्लीमेंट किया टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। तो अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा। जी योर ऑनर, एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई मतलब योर ऑनर मेजॉरिटी ऑफ रीजन। खान साहब जरा मुझे समझ नहीं, योर ऑनर आप कानूनी हम क्यों गए थे? योर ऑनर फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये योर ऑनर सिर्फ एक मिनट, अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस योर ऑनर, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाईकोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये इसका जरा कानूनी जवाब दीजिए। योर ऑनर मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। पर वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का। योर ऑनर वही ऑर्डर है, लेकिन उसको जब हमने अमल कर लिया उस पे, जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में, पेशावर में इस इलेक्शन ना इन्फ्रक्चर्स होने ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इन्फ्रक्चर्स हुई है। योर ऑनर वो लीगल साइड पे इन्फ्रक्चर्स दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर। Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench.
Yes, Your Honor, High that's Court right. raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. Yes. According to legal situation, it had Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but This since is the questions this were is the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, which is the legal appearing questions before the- involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to नहीं, sorry, Islamabad. आपके अपने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called चमकनी. Your Honor, हमने अरेंजमेंट करवाए थे, इनको सिक्योरिटी मांगी, एक सेकंड हमने पेशावर जी योर ऑनर Are you arguing as party, as council, what? योर ऑनर जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं नहीं, उसका हमें जवाब हम दे रहा तो सीनियर काउंसिल से लेना चाह रहे हैं. We have noted all the questions. नहीं, मैं सिर्फ Put it in writing. खान साहब देखिए, let's go by कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. जी हम अभी उस पे नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया. जी. आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं. वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी. आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें, चलें, ये भी ठीक है. आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी. फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए, तो अब आप ये पिटीशन इसको खत्म कर दें. उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जुडिस विथ फुल बेंच. अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है. चलें, अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं. इन्फ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना, कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पे पास करेगा, जज इन्फ्रक्चर्स हो गई है, वापस हो रही है, जो भी आप कहना चाहें. उस पिटीशन को आप जिंदा रख रहे हैं, आप जाके पेशावर हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए, ये मुझे समझ नहीं देखिए, ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए. तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया आपको? नहीं, लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं. नहीं सर, अब वो मतलब ये मुझे नहीं सर, उसका वजह है, उसकी वजह ये जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई. आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है. हम अगर हाई कोर्ट नहीं देती हम आपको देते. हाँ, ये बताएं. ये ना बताएं. हाँ, सब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते. सिक्योरिटी का योर ऑनर, ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं. ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे तो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए. जो आप देंगे राइटिंग में आपके सामने. मगर देखिए ना, फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस. ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए. तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा. हम ये नहीं चाह रहे, इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं. दूसरा, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको पहले कर लेते हैं. तो ये हमें जब तक ये इस पे, अब देखिए वही सारे लोग हैं, सैयद अली जफर साहब भी वहां मौजूद हैं, वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का. ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं, वही काउंसिल है ना सारे. पेंडिंग है. We'll submit in the morning, sir. हम चले, मगर ये देखिए, अब आप गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था, फोरम शॉपिंग, जो कोर्ट्स जनरली फ्राउन अपॉन. तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे कोर्ट में चले जाओ. तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है. तो देखिए, अब आपने ठीक है लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में. फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर? या फिर आप जाइए जहां के इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद है. तो देखिए, अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूं जाकर फलां जगह मैं इसलिए पिटीशन करूंगा. आप अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते. कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ.
यानी कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया उस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जनाब, अच्छी तरह जानते हैं भाई। आपके जो भी सामने पहले बात पूरी चलो। हाँ। आपके सामने पेंडिंग है केस जिसमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है, हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, ये सारी बातें कही। हमारे साथ जो हो रहा है इन दीज सर्कमस्टांसेस में, ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते। सो पार्टी ने डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इज इन पेशावर एंड देयरफॉर वी हेल्ड द इलेक्शन इन पेशावर। When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. देखिए खान साहब जी, एक होता है इंतजामिया, इसमें अभी अब कई, एक है इलेक्शन कमीशन, वो एक आईनी इदारा, एक है अदालतें जो कि आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप आए हमारे पास, अली जफर साहब उस केस में थे और इलेक्शन की बात हुई, हमने उस केस का फैसला 12 दिन में कर दिया कि इलेक्शन हो। 8 फरवरी की तारीख तय हुई, सब लोग खुश थे, आप भी की पार्टी खुश, इलेक्शन कमीशन खुश, सदर खुश, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल खुश, चारों एडवोकेट जनरल खुश, सब ने ये मुतफ़िक़ा तौर पे ये हो गया। तो जब भी कोई, अब आप यकीनन आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होंगी, मगर कोर्ट उस वक्त आएगा जब कोई आए तो उसके सामने ना, दूसरे केस में कंटेम्प्ट मैटर में आए, वो एक और बेंच ने फौरन ऑर्डर पास कर दिया कि जी सारी सहूलतें जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ दी जाए। उसके बाद कंटेम्प्ट आई, फौरन हमने ले ली कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, जो उन्होंने केस बनाया हमने उनको रिपोर्ट मंगवा ली। तो ये जहां तक हमारा ताल्लुक है, या तो बताएं हमने कोई काम नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट को आप गए, आपने कहा जी लार्जर बेंच बना दो, उन्होंने 5 मेंबर की जगह बेंच बना दी, फिर आप उसको अबैंडन कर रहे हैं ना। या तो आप कहें कि मैं वापस देता हूं केस खत्म, मगर उस केस को लटका के कहीं और कैसे जाना है, ये जरा समझाने की, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो वर्चुअली इंफ्रक्चुअस हो गया, इसलिए तो फिर एक लाइन की दरखास्त देना थी ना, वो तो कोर्ट खुद आपको कह रही है आपने इलेक्शन कर लिया तो ये तो मैटर खत्म हो गया। आपने कहा नहीं नहीं, ये फुल बेंच का आप बनाएं और ये हम करेंगे। तो ये तो आपने, फिर आपने सॉरी टू यूज, मगर ये तो फिर आपने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, फिर आपने अपने आप को रोक दिया लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। आप उधर से निकल जाते, आप कहते खत्म हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, केस लगा नहीं उसके बाद, जो भी बात है, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट ने सीज तो कर लिया ना, लिस्ट वहां पड़ी हुई है। एक इलेक्शन का मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्शन का मैटर इस्लामाबाद में, पेशावर में चला गया। तो अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं, ये तो कभी नहीं करते हैं ना कि साहब ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये जुरिस्डिक्शन का इशू उठाए हाई कोर्ट के सामने, पेशावर हाई कोर्ट में, वेदर the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of interrelated jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Pirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd 11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. So there is an identical petition to petition 6-1. That's not party's petition. This is It is absolutely incorrect. My lord, that petition Making incorrect statement. may I complete what I'm saying? चलिए आप नोट कर लीजिए, that can be My lord, responded that because petition is this is issue of issue of jurisdiction. नहीं तो ये जरा ये तो तय्युन कर लें, WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023, are they still pending
in the Lahore High Court? Can we have a clear statement on that? Yes. आप बताएं खान साहब, आप you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ is the petitioner in both these petitions apparently. ये pending है. आज की तारीख में क्या पोजीशन है? 332 में योराना पीटीआई नहीं है, उसमें इमरान अहमद खान नियाजी है. Is it pending or not? Yes, pending. दोनों pending. दोनों pending हैं. That is his personal grievance on that Personal account. चले वो भी अलग कर दिया, मगर आपने उसको क्लब कर दिया 811171. तो how when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? योराना नया subsequent cause of action arise हुआ है, subsequent election take place हो गया. जिस तरह बंदा convict हो जाता है, सजा काट के बाहर आ जाता है, अपने conviction से होटल चाहता है, तो ये वही है. हमने कहा जो फाइंडिंग दी है पहले में वो भी गलत थी. पहले डिसीजन इस बात पे सेट असाइड कैपेसिटी में हमें आप वकील आज हैं या मैं आपकी सिर्फ जरा देखिए ना, ये जरा देखिए, ये खान साहब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, तो हम जरा खान साहब की अगर सीनियर काउंसिल का फिर फायदा हम नहीं उठा रहे ना, अगर आप या फिर वो भी अपनी बात कर सकते हैं, वो समझते हैं कि वो खामोश हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप चुन लें. मगर आप उनके कान में भी बता सकते हैं खान साहब के, मगर जरा देखें लीगल इशू को हम जरा रिजॉल्व तो कर लें ना. तो ये देखिए, मेरा जो तरीकेकार है शायद लोगों को पसंद भी नहीं है, अगर मेरे या पसंद है पता नहीं, जो मेरे जहन में कोई कानूनी लीगल इशू खड़ा होता है मैं खामोश नहीं रहता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये आप अटेंड कर लें. ठीक है, जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे जो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है. कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला करते थे, पूछा भी नहीं मुझसे. तो मैं आपको सिर्फ हमारे भी एडवांटेज में है कि जो जनाब ने सवाल पूछा हम उसमें आपको फैक्चुअल प्ली है ना, इस पे तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें. This will be addressed. Okay. So can we continue with जी मखदूम साहब फरमाइए. My lord, just to complete the sequence of what your lordship was presently dealing with, even after this second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition. और पिटिशन है जी दूसरे ऑर्डर के खिलाफ. That is, my lord, the petition number 287 of 2024. 287 of 2024. ये पहले पिटिशन दिखाई कहाँ है? Sir, this is page 615 to page 615 to 630. ये एक चीज अजय, ये दो केसेस मालूम कीजिए लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं. ये बेटी है Peshawar at 616, your lordship will see they claim to be ex-secretary general and candidate PTI Gujranwala. ये उमर आफ्ताब हैं Umar Aftab और बिलाल नासिर. page 616 and Bilal Nasir. तो ये तो पीटीआई नहीं है. No, they are, he's, if your lordship will see, son of Chaudhry Dellu, President PTI Sheikhupura. वो उन्हीं के ही हैं, वो उसमें लिखा हुआ है. Is the President PTI Sheikhupura. This पिटिशन का नंबर क्या है? This petition number, my lord, is नील लिखा है 287 of 2024. इसमें क्या उनकी प्रेयर है? Identical to 616. Identical, I will read out to your lordship. That's at page 629. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may kindly be pleased to: 1. Instant petition may kindly be accepted, hold and declare that the impugned order of ECP dated 22/12/2023 is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof set it aside forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order dated
22/12/2023 forthwith and direct the Election Commission, Pakistan, to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith, declare that election symbol has been illegally and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners. अब जो पिशावर वाली पिटीशन है वो दिखाइए सर, उसका पेज नंबर 49 है, पार्ट वन में है सर. And if your lordship see, your lordship will find that they are virtually the same. इसमें ऑर्डर का जिक्र नहीं है 22/12 का. ये 22/12 का ऑर्डर कौन सा है? The impugned order is of 22/12, my lord. इसमें तो नहीं है कहीं 22/12. प्रेयर के अंदर नहीं लिखा हुआ, but otherwise the petition impugns the order. कहाँ लिखा हुआ है? My lord, your lordship will see the impugned order in the index at page 30. And नहीं, पिशावर में जो पिटीशन है, अभी प्रेयर क्लॉज में 22/12 का जिक्र कहाँ है? Declare the impugned order. Prayer mentions the impugned order, which if your lordship will see the impugned order, that's at page 21. नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि पिटिशनर ने डिस्क्राइब क्या है impugned order. ये impugned order सर पेज 33 पे grievance and impugned order. If your lordship will see, ये लिखा हुआ है इसमें. aggrieved by order dated 22/12/2023 passed by respondent number 1 as the impugned order. पैराग्राफ 1 में जिक्र है. जी, is the same. अच्छा, इनका कहना कि क्या है, ये हमने फाइल नहीं की है लाहौर वाली? Sir, right now that's what your lordships have heard. I don't know. I will ask that question. In Lahore, has the Lahore High Court passed an order? In Lahore High Court, an order was passed, and I have placed that order before your lordship. That is at page 631. अच्छा, ये क्या है? This is an order of the learned single judge. ये क्या किया सिंगल जज ने? Single judge, sir, held that you have also gone in respect of the same order to Peshawar, so I will not hear the matter. But the determination by the single judge is at page 634. ये डिस्क्लोज किया था कि WP 81171 और WP 332 पेंडिंग है. सर 8771 तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी ना सर? ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में है. इसमें इन्होंने जिक्र, ये इनको पता था जी, पेशावर इसका जिक्र है डिटर्मिनेशन में. द लर्नेड सिंगल जज सेज दैट इफ योर लॉर्डशिप में सी, नहीं तो उन्होंने काम नहीं फैसला करेंगे जी. दे सेड कि वी विल नॉट डील विद इट. इफ योर लॉर्डशिप सी पेज 637. ये तो ऑर्डर स्पीकिंग, ये तो फिर तो ठीक है, ये ऑर्डर विल नॉट कम इन द वे. This is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में. That, and my lord, they say 639 point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, more specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see 5th line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines on page 639. 639. Achha, okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the ये Constitution. उन्हें चैलेंज किया ये ऑर्डर? ये ऑर्डर में ये डीबी में गए सर. उसका नंबर क्या है ये का? They went in division. एक सेकंड, इस ऑर्डर की डेट क्या है? We got that order. Yes. ये इस ऑर्डर की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January.
11 जनवरी in intra-court appeal number 2282. नहीं, अब इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर बताइए जी, इंट्रा-कोर्ट अपील का नंबर है लर्नेड सिंगल जज का क्या ऑर्डर है? 2282. लर्नेड सिंगल जज के ऑर्डर की तारीख बताइए। जो आप पढ़ रहे The थे order अभी। of the learned single judge is dated 3rd of January 2024. 3rd of January 2024 at page 631, your lordship will see the date. अब ये गए इंट्रा कोर्ट अपील में, जी, ये they go in intra-court appeal आईसीए में नंबर आईसीए का 2282 of 2024. जी। That in, इसमें क्या होल्ड किया? sir, in क्या that आपने कॉपी दी खान साहब को? ये विड्रॉ कर ली इन्हें अपील। जी sir, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer for the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, Or you don't know? this is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. ये पूछ लेते हैं खान साहब जी सर, पूछ लें। खान साहब, do you own this petition or you don't? 287 and IC at 2282. We don't. नहीं, who are these people? क्या नाम का? बिलाल नासिर चीमा and ये कौन लोग हैं? बिलाल नासिर चीमा कौन These are है? not on behalf of the party. Candidates have filed. नहीं, who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? No, we have not. Who are these two gentlemen? There may be members of the party. I don't know. I think They are नहीं, not इसमें लिखा है officers of the एक्स, party. नहीं इसमें लिखा हुआ है ना, प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, एक्स सेक्रेटरी जनरल एंड कैंडिडेट पीटीआई। देखिए, दो बातें होती है ना, एक तो कैंडिडेट अपने तौर पे जरूर कर सकता है, मुझे वो क्या उसको कहते हैं, मेरा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, वो तो बात उसकी सही है, मगर इसमें जो उन्होंने प्रेयर मांग ली है वो तो पार्टी की बुनियाद पे मांगी है। तो आपने कोई स्टेटमेंट उधर दिया कि ये इसको काटें, ये प्रेयर इसको इधर से, ये प्रेयर हम ये देखिए पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं। He had no authority on behalf of the party तो to आपका file इंटरनल or मैटर है ना, अब हमें क्या पता आपके पास अथॉरिटी है, गौर साहब के पास अथॉरिटी है, ये तो हम नहीं कर सकते ना तायुन। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये हमारी तरफ से यानी पार्टी की ऑथराइजेशन से नहीं हुई, ये इंडिविजुअल्स ने की है। नहीं, मगर खान साहब जैसे आपने लिखा हुआ है, ये उमर आफ्ताब, सॉरी सर, उमर आफ्ताब है प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, और ये जो बिलाल नासिर चीमा साहब हैं एक्स सेक्रेटरी जनरल एंड कैंडिडेट पीटीआई That's what he's claiming, you see. नहीं, मैं आप हमारी बात सिर्फ समझ लें, नोट कर लें। जी जी बताएं। एक चीज है ना, पता नहीं हो सकता है हजारों पिटिशन फाइल हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, मगर जब ये चीज अगर उस पे आ जाए रेडार पे, तो इसका जवाब वो उसका आप जवाब हमें दे दीजिएगा। अगर जहां तक उनकी जाती मसले हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, कोई और इशू है, बिल्कुल करें, वो तो हर कैंडिडेट अपनी भरेगा, आप पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है उस लिहाज से, मगर अगर वो पार्टी को जो प्रेयर उसने मांग ली ना, वो पार्टी की मांग ली प्रेयर उसने, और उसपे जज साहब ने फाइंडिंग भी दे दी, तो अब वो जजमेंट को हम इवेपोरेट तो नहीं करेगा ना हवा में। उन्होंने कहा कि जी जब तक आप ये दो शिकें इलेक्शन एक्ट की चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये बात कर नहीं सकते। हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, मगर एक जज की फाइंडिंग आ गई, वो फाइंडिंग दो जजेस ने कंफर्म कर दी, तो अब
तसादुम तो हो गया ना पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। अब जजमेंट्स गायब तो नहीं होंगे। वो लाहौर हाई कोर्ट वाला जजमेंट आपने हमारे सामने चैलेंज किया है? सर हमने पार्टी हमने चैलेंज किया सकते जो कर रहे हैं ये कोई अपनी तरफ से ना चैलेंज करना चाहिए दोनों को पार्टी बता रहे हैं। सर उसमें हम पार्टी नहीं है, पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट देयर। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मगर जज साहब ने सही या गलत एक फैसला तो कर दिया है ना, वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो HM साया केस में अगर आप पार्टी ना भी हो तो आपको हक तो मिलता है ना। तो अब आपको पता चल गया है एक जजमेंट आपके खिलाफ आ गया है, और किसने फाइल किया है? कोई आपके दुश्मनों ने नहीं किया, आपके अपने लोगों ने फाइल किया है। वो तो एक अलग बात है, किसी ने शरारत खेली आपके साथ और चलो भाई ये कर दें, वो आप ही के लोग हैं, आप उनको आपने नजरअंदाज भी नहीं किया है कि हमने इनको पार्टी से खारिज कर दिया। क्या है, आपके कैंडिडेट भी हैं PTI के, तो उनको हम ऐसे तो हम, और अब हाई कोर्ट के जजमेंट्स को हम क्या करेंगे? कोई चैलेंज करेगा ना, नहीं तो अब जो भी फैसला है उसको जब तक कोई चैलेंज तो करे ना, फिर हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं। अगर आप उसको चैलेंज ही ना करें, उसको छोड़ दें कि जी हम तो उसमें पार्टी नहीं थे, जजमेंट फिर भी रहेगा अपनी जगह पे ना, वो तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम रह जाएगा अपनी जगह पे। अब वो आपको भी शायद अफेक्ट करे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अफेक्ट करे। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है कि भाई ये जजमेंट गलत है, तो वो तो कह सकते हैं कि हम तो इस पार्टी में नहीं थे, हमें सुना नहीं, मगर आपका तो फिर नहीं कह, आपके कहना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहरहाल आप नोट कर लीजिए बात, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का भी ICA में ऑर्डर हुआ है, WP में हुआ है? WP, my lord. IC है ही नहीं है पेशावर में, IC नहीं। Two judges here, the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord. Have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the two judges and say there are three judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both, okay, both it's cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen. No, ये इसको छोड़ें, general question of law पे पूछ रहे हैं. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. जी, continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And election commission shall be comprised following: Federal Election Commission. वो हमने पढ़ लिए 4 सूबों के और 2 दूसरी टेरिटरीज के, and sections की violations हो रही है. And these are the ones which the election commission says. What is the position of the election commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman is the chairman, who is also the respondent number 2, is the chief election commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your lordship's files, which your lordship just saw, by Mr. Umar Ayyub. The election commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party?
My lord, the Election Commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your lordship, that the Election Commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, you know or no? As a matter of fact, we don't, my lord. My instructions are Now, that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's earlier position was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they're saying, election commission says, no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections, has the political party set aside its own elections and said we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे जी